Rahim. Assalamu alaikum, all my dear students. Hope all of you are fine and enjoying a healthy stay at your home. This week we will do chapter 4, Turning Effective Forces, and I am your teacher Maryam Iqbal. Let's start solution of our numerical problems. Numerical 1 is find the resultant of the following forces: 10 Newton along x-axis, 6 Newton along y-axis and 4 Newton along negative x-axis. डाटा सबसे पहला स्टेप होता है हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का. डाटा हमने बना लिया विच इज F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, F2 6 न्यूटन एंड F3 4 न्यूटन. अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और जब भी आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी दी जाती है आप ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल यूज करते हैं. अब न्यूटन ऐसा यूनिट है जिसको आप स्केल से मेजर नहीं कर सकते, तो हम अपना स्केल सेट कर लेते हैं. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन. So F1 will become 5 centimeter, F2 3 centimeter and F3 will become 2 centimeter. By using head to tail rule, we have drawn 5 centimeter along x-axis, 3 centimeter which is force F2 along y-axis and 2 centimeter along negative x-axis, and resultant force will become 4.5 centimeter and force will be equals to 9 Newton approximately. So resultant force is 9 Newton, which is making an angle 45 degree along x-axis. Numerical number 2 is find the perpendicular components of a force of 50 Newton making an angle of 30 degree with x-axis. अब perpendicular components हमने formula हमें पता है, हमने पहले find out किया हुआ है using equation 4.3 and equation 4.4. Resultant force F is given which is 50 Newton and theta is 30 degree. We have to calculate Fx and Fy. Using equation 4.3 and 4.4, Fx is equals to F cos theta. Putting values in it, we get 43.3 Newton and Fy is equals to F sin theta. Putting values in it, answer is 25 Newton. Numerical 4.3, 4.4 and 4.5 are on the same pattern and I have given you the hint how these numericals can be solved. You can solve numerical 4.3 by using equation 4.5 and 4.6. Numerical 4.4 can easily be solved by using equation 4.7 and numerical 5.5 is by using equation 4.3. Numerical 6. The steering of a car has radius 16 centimeter. Find the torque produced by a couple of 50 Newton. Couple होता है two unlike parallel forces. आपको डायग्राम शो की गई है कि कपल जो है वो स्टीयरिंग व्हील पे एक्ट कर रहा है और उसका रेडियस जो है वो है 16 सेंटीमीटर. अब रेडियस होता है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब जब पूरे स्टीयरिंग व्हील को हम कंसिडर कर रहे हैं तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस कहलाएगा डायामीटर. सो डायामीटर इज इक्वल्स टू डबल ऑफ रेडियस. सो डायामीटर विल बी इक्वल्स टू 0.32 मीटर. सो यूजिंग इक्वेशन torque is equals to Rf. R is 0.32 and force is 50 Newton. So answer is 16 Newton meter. Next is numerical 7. A picture frame is hanging by two vertical strings. The tension in the string are 3.8 Newton and 4.4 Newton. Find the weight of the picture frame. कि एक पिक्चर फ्रेम है जो कि दो स्ट्रिंग के साथ अटैच है. एक स्ट्रिंग की टेंशन है 3.8 न्यूटन और सेकेंड स्ट्रिंग की टेंशन है 4.4 न्यूटन. हमने पीछे पढ़ा था कि जितना वेट होता है उतनी ही आपके पास स्ट्रिंग्स की टेंशन होती है. सो यूजिंग दिस थिंग W weight is equals to tension of the strings. Weight is equals to sum of the two tensions in the string T1 plus T2. So weight is equals to 3.8 plus 4.4 is equals to 8.2 Newton. Numerical 4.8 can easily be solved by using the pattern of numerical 4.7 and I hope
it will be easy for you to solve it. Next is numerical 4.9. A nut has been tightened by a force of 200 Newton using 10 centimeter long spanner. What length of a spanner is required to loosen the same nut with 150 Newton force? अब स्टेटमेंट को देखते हुए हम यूज करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। जितनी फोर्स हमने नट को लूज करने में लगाई है उतनी ही नट को टाइट करने में लगेगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। आपके पास डाटा हम लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन, radius is 10 centimeter, 0.1 meter. Now you have to calculate the radius which is required for a spanner to lose the same nut when force F2 150 Newton is giving. Using principle of moments, torque 1 is equals to torque 2. It means anti-clockwise moment is equals to clockwise moment. So using this equation, R1 F1 is equals to R2 F2, and by eliminating R2 on one side, equation become R2 is equals to R1 F1 over F2. Putting values in it, we get the answer 0.133 meter, but in the numerical answer is given in centimeter. So by changing meter into centimeter, answer is 13.3 centimeter. Last and very important numerical, a block of mass 10 kilogram is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of a uniform bar 1 meter long. What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar? स्टेटमेंट गिवन है हमें कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है 1 मीटर का, एंड यू नो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब आपको जो फिगर मैंने बना के दिखाई है उसमें यही दिखाया है कि 1 मीटर रॉड है हमारे पास जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगी। अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 सेंटीमीटर पे होगी, विच इज डिनोटेड बाय पॉइंट ओ। अब न्यूमेरिकल में कहा गया है कि अगर हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग रॉड है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यानी 50 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के फासले पर एक मास हमारे पास हैंग हुआ है जिसका मास है 10 किलोग्राम। आपने फाइंड आउट करना है कि कितनी फोर्स लगाई जाएगी इस रॉड के ऊपर कि यही मास हम इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी 50 सेंटीमीटर पे एडजस्ट कर सकें। अब यहाँ से पहले हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे। F1 is equals to W, which is equals to mg. Mass is 10 kilogram and gravity is 10 meter per second square. So 100 Newton is the force when the radius distance from the center of gravity is 20 centimeter, 0.2 meter. If the radius become 50 centimeter, 0.5 meter, what would be the force? Applying same condition principle of moments, torque 1 is equals to torque 2. We can calculate F2, which is equals to 40 Newton. Now your home task is that you have to solve all the numericals 1 to 10 on your neat notebook, and you have to send me the images of your work till Saturday. Thank you. Please watch this video very carefully, and in case of any query, inshallah we have meet class on Monday. We will discuss about the numericals, and please submit your task on time. Thank you so much.